next we have our panelists, Miss Archana Srivastava, Principal, East Point School, New Delhi. आपको देना Michelle Morris, इसको Head ऐसे ही रखना Mistress, Indra Idol School, Janakpuri. Everyone, please give your big hands. तालियां बजती रहनी चाहिए, please. ट्राइपॉड व्हाट अबाउट ट्राइपॉड थोड़ा सेट कर लेंगे अच्छा And the next we have is RC Jain, President, Delhi State Public Schools Management Association, New Delhi. I guess after lunch we all are very energetic. So our family थोड़ी नींद आ गई, I guess. So तालियां बजा के नींद को भगा देना everyone, please. No time तालियां for all of us. For all the knowledge जो हम लेने वाले हैं आज हमारे panelists से. Thank you so much. All right, thank you. Thank you. See, EdTech is a very interesting topic after the pandemic because I always consider EdTech personally as a perennial bridesmaid. The next turn आने वाला है कभी आता नहीं. Nothing really changed in the way technology was being used in schools until COVID happened. So, and now because of having EdTech, thankfully we were able to survive these 2 years. Our children were able to continue their learning, चाहे drop हुआ या कुछ तो होता रहा. Honestly, तभी आई schools को, and teachers also got paid as a result of. So imagine 8-20 years पहले हुआ था, we would have been depending on SMSs for sending worksheets and all, would have not been possible. So very grateful to this knowledge availability which has happened to us. And as I was saying, people had to, as ma'am was talking in the previous panel, the word dinosaurs. To avoid being dinosaurs, we had to innovate. Every teacher had to think, अगर मैं नहीं सीखूंगी कैसे online use करना है, then I will not get my salary. That became a question of survival for teachers and for schools as well. But what the good thing that happened is that the same teacher today, अब छुट्टियां हो गई हफ्ते कोई बात नहीं, let's switch to online. Now we're all comfortable. It made us think what are the other possibilities, how should technology be used in education. And now the schools have reopened, what I would really like to discuss about is what are we taking forward from these learnings which we are now implementing. So what change that may have taken us 10 years to achieve integrating technology in education, maybe 2 साल में हो गया वो. So that's the kind of things I would like you to share, please. And practically, what are you using in your school right now? And what do you think are your successes and failures? And so that everybody can take away some tips which they can implement in their classrooms and schools tomorrow as well. So I'd like to straight away go to you, ask you what has changed in your schools pre and post pandemic when it comes to technology integration. Good afternoon, everyone. Thank you, sir, for your question. Definitely, sir, pre and post pandemic, if we talk about, technology has really taken a great leap. And today, we cannot imagine our classrooms or our lesson plans without technology. Because technology has been integrated and webbed into our curriculums in such a way that beyond technology it is just not possible to go. But at the same time, when we talk about technology, we also need to understand that it was not only after COVID that we were using the technology. We had smart boards earlier, we had tools earlier for assessment, evaluation, and we had various technologies which gave exposure to our children for better understanding. But yes, with pandemic, there were various, it was a flow of tools and technologies that came into the system, wherein everyone had the challenge to upgrade themselves in a day or two. 18th March we closed, and 22nd March we were from chalkboard to the laptops. So it's a hats off thing to the teachers also, that they adapted to the changing technology, and not only the teachers, the students as well. And today, when we talk about once the schools have opened and the children have come back to schools, one thing which I actually can say with proud is that children always tell that there is no substitute to the physical presence in the school and to my teachers.
Because what the children experience in the playground, in the classroom, in the labs, they have never experienced in these 2 years. So technology definitely has webbed into our system and we cannot do away with it. But I firmly believe that technology will never be able to replace teachers. Teachers are going to be the paramount in the education system, and definitely with this also I would like to say that teacher who will not upgrade herself as per the technological changes and advancement might be replaced. But teacher's place will always be paramount. So this one thing which I would like to bring. And secondly, what I would especially like to focus on is the one aspect we all speak about technology and we all speak about advancement and other things. But are we really looking at the emotional and the mental health of the child? How much time a child is devoting to the screen? How much time a child is actually devoting to such activities which involve the usage of those technologies? Because it is extremely important to make the child resilient as well. Because upgrading a child is very, very important because we cannot do away with it. But at the same time, the 21st century skills that we talk about, is technology bringing those skills also, developing those skills also in the child? Is the child becoming resilient? Is the child becoming more compassionate, empathetic, more rigorous to face the challenges of this different situations that we face? Because the recent cases in Kota which have happened, really, it raises alarms to the education sector that what is actually happening. So we need to understand that when we talk about technology pre or post COVID, or what is the role of technology or what has been the shift in the technology, definitely role of technology can never be denied. But we also need to be very cautious and careful about it. So how do you think technology, can it be used to improve the mental health, develop that maturity amongst children? Do you think it has a role, or do you think that's purely the role of humans? Sir, see, no, definitely it has a role. Technology can definitely, because there are different sort of tools wherein you have got such beautiful music and all, which actually talks about the neurosciences and all, wherein those type of technologies, if we talk about, and if the child is really disturbed or emotionally not balanced, then definitely the child can develop, such sort of emotional health and mental health as per the tools that are available. But as I said that there is no replacement to the physical presence of the children in the school, similarly there is no replacement of a human relationship. Because I as a principal often meet parents who come and cry, children I meet who come and cry. But why? Because they both are not available for each other. So we need to understand that it is high time that apart from technology, we also give emphasis on the emotional and the human relationship, which can make us a whole nation as a, of course, strong nation. But once our relationship is strong, our home is strong, it will, the trickle down effect will go to everywhere. So that is there. But definitely, as I said, sir, technology can definitely not be replaced. But yes, we need to know the exact place where and how to use it. So it's a tool that has to be used where it should be, not Exactly, as sir. a replacement for the current schools. So I think Definitely. that question has gone out of the table, where will technology one day replace schools? I think that is answered. That's a gone question. Not just the It's teachers, a gone but the question. school also, the physical No. schools. I think we all No, sir, share it with can that. never replace. It can never replace the. As I told, teachers, they have the highest pedestal, and at least for me, being a teacher for since 1995, I am the teacher, and right now I am a principal. There is no other profession that deserves more better respect than the army, defense, and of course the teachers and farmers. For me, these are the things which deserves my salute. So I don't think such technology can ever replace teachers. Thank you so much. Thank you. Michelle, ma'am, again, same question to you. How is your school pre and post pandemic? How is it different, and what has changed over the 2 years? And what Am I do you audible? wish? Okay, good afternoon to all of you.
So there was a time when the teacher saw the mobile in the child's hand and she got very angry. And now she is still angry because the child does not have a mobile to learn online classes. So where have we reached? So it is really difficult to say because now after the pandemic, thanks to the pandemic, that we have got the opportunity to teach online. And believe me, many of us as teachers were really afraid, how will we teach online? I don't know anything. But then the students, our own children in fact said, of course you can do it. And then thanks to the 2 years, we as adults also came at par with the so-called new generation to use the tools of online. Now, main thing of education, what I believe is, we are educating our children for n number of years. That's our duty. But right now, I'm concentrating on educating my parents, the parents of my school. So recently when I met the parents of my school for the PTM, and I told them that your child is not doing well, and how will he go to the next class? And most 90% of the parents said, ma'am, ये 2 साल जो online हुआ, ओहो, मेरा बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाया. They gave that excuse. But online was the time when the parents could be with the child and help him to learn, and they themselves could learn. But nobody really took it seriously. It was just a few percentage of parents who made it a point that the children study online. Those who had problems with the network, they gave up. Those who didn't have 2 mobile phones, everybody couldn't, they gave up. They said, now let's see, okay, I will teach you, and we don't know what happened. Now, it's back to the offline. And all the children and all the parents want that online does not happen again, but yet they are ready for the future. So nowadays what's happening with our teachers, we are teaching offline, the classes are going on well, and if something is left, children, don't mind, I'll meet you at WhatsApp. I'll meet you online. Don't worry about it, I will take care of everything. Now, what I feel as a person and as a parent, because most important, we are educationists, we are teachers, we are everything, but mostly the first foremost thing is we are a parent. As a parent, I want that these children whom I am in contact with, as they grow, they should gain knowledge in the right perspective, and they should get into a good company which is paying them a high salary. I want that. I want it for my children. Why a high salary? Because at the end of the day, that salary goes to their parents. Because I want the child to realize that whatever they are now, whatever they have become, whatever field they have taken, and if they have reached a top position, the credit, yes, does go to the teachers, of course, but the salary of the child should be given to the parents. The parents should feel that they have really educated their child so well, because most of us, all of us, we are Indians, and we believe in our culture. And we believe that is the parents and the teachers. So yes, online, offline, study as you want. But don't forget the grassroots. End of the day, you are answerable to your parents, and the parents have to be proud of you that they have been. Thank you. Yes, thank you, ma'am. I think we got some good points from both of you in terms of it's being used for communication, for supplementing the teaching learning in the classroom, the lesson plans. And of course, we're all using some form of app or ERP or school management softwares. And of course, these are all outsourced to our companies and the edtech companies, some of them which became unicorns during this time as well. So, Jensa, ultimately, it comes to the question of money also then. Anyway, one is the feasibility in the classroom, as the educators have said, but
ultimately who pays? And since you look after the responsibility of so many schools in Delhi NCR, Delhi especially, and with the government sword hanging on our shoulder all the time about regarding fees, who pays for this? और इसका क्या मॉडल होना चाहिए और क्या ये feasible है or just glamour या marketing है? How do you see edtech and ultimately the commercial viability of it? Because ultimately it has to add value to somebody's life and somebody should be happy to pay for that, and that is what. But यहाँ पर is it adding value first? ये नहीं मालूम अभी. हाँ ठीक है, हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एडमिशन बढ़ेगा, उस स्कूल ने स्मार्ट क्लास लगा दी, हम भी लेंगे, उस स्कूल ने सर रोबोटिक्स लगा दी, आप भी लगा लीजिए. So there is this technology, but ultimately, and who's paying for that? And with schools under so much pressure, that I'm sure there are some edtech companies who are suppliers. How should they look at the situation? उनको लगता है कि हमारा solution स्कूल वालों को समझ क्यों नहीं आ रहा? Whereas we are a problem because we know कि parents will come and fight कि fees क्यों बढ़ा दिया आपने? So how do you see the role of edtech in that sense, both from value and in terms of money as well? इससे पहले वाला जो पैनल था उसमें एक बात निकल के आई थी कि जो हिंदी में बोलता है ना, उसको आप ये बस समझना जीरो है, और मैं हिंदी में बोलूँगा. क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी जब गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो थे अपने नरसिम्हा राव जी यूएन में, तो हिंदी में बोले थे. इंग्लिश तो आती होगी मुझे शायद, क्योंकि मैं समझ रहा था सब बैठ के, तो इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा. देखिए, आप जिस समय का आज ये चक्र चल रहा है, इस समय आप अपने आप को टेक्नोलॉजी से बाहर तो रख ही नहीं सकते. ये जो मेरे हाथ में अभी मोबाइल था, इसके बगैर मैं 2 मिनट नहीं रह सकता, और आप हम सब कोई भी नहीं रह सकते. इस मोबाइल में ही सिमट के रह गया है सारा हमारा बिजनेस और सारे रिश्ते और सारे टीवी, घड़ी, रेडियो वगैरह सब. अब जहां तक ये कि इसका एक्सेस इस्तेमाल, उसको कैसे रोका जाए? आपको ध्यान होगा जब पिछले 2 सालों में कोरोना आया, तो जो कैपेबल पेरेंट्स थे उन्होंने तो ठीक है अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया. पर चूंकि जिन स्कूलों की मैं बात करता हूँ, जो बजट स्कूल्स हैं, जिनमें बहुत ही लो कम फीस वाले पेरेंट्स होते हैं या जिसके 4 बच्चे हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाया. हमें जब ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम ये भी सोचना चाहिए कि मेरे कुछ बच्चे तो बहुत आगे ना निकल जाएं और मेरे वो बजट स्कूल के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो बहुत पीछे ना रह जाए. वैसे ही अभी हमने एक लाइन बहुत बड़ी खींच रखी है कि पब्लिक स्कूल का बच्चा बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया है, वो अपने लाइफ में आगे निकलता है, और सरकारी स्कूल का बच्चा जिसे कहीं दाखिला नहीं मिलता, जो फीस नहीं दे सकता, वो अपने बच्चे को मन मार के पब्लिक स्कूलों में ना दाखिल करा के सरकारी स्कूलों में. हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो लाइन है अभी तक गरीब और अमीर के बीच की थी, अब वो ये स्कूलों में बहुत लंबी ना खींची जाए. बहुत उस समय चर्चा होती थी कि ये जो 4-4 घंटे 5-5 घंटे बच्चे ऑनलाइन पे हैं, कितना उनके दिमाग पे फर्क पड़ा था, ये आप बेहतर जानते हैं. आपने महसूस भी किया था कि बच्चा चिड़चिड़ा भी हुआ है. बच्चे के दिमाग में जब वो मोबाइल खोल के बैठता है, ऑनलाइन पढ़ता है, तो मुझे पता नहीं चलता कितने पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चे पे, एक बच्चे पे चलो आपने ध्यान दे दिया, आप उसको लेके बैठे, पर अगर 4 बच्चे आपके यहाँ, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और अलग अलग क्लास के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे के ऊपर पेरेंट्स पूरी तरह से ध्यान दे पाते. प्लस अब पेरेंट्स भी तो काम घर से ही कर रहे थे, तो उनका अपना करियर भी चल रहा था साथ. हाँ, देखिए अभी मैं चीज 2 बातें और बोलना चाहूंगा. अभी हमारा एक स्कूल है ट्रांस यमुना में, उसने जब ये स्मार्ट क्लासेस शुरू की और स्मार्ट क्लास शुरू किया तो उसके लिए यू हैव टू पे. उन्होंने कुछ खर्चा डाल दिया बच्चों के ऊपर, तो वो बच्चे आके फैल गए. और खास तौर से जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, क्योंकि वो तो भगवान के गिफ्ट है ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हमारे पास आते हैं, तो वो कह रहे हैं हम तो नहीं देंगे. वो व्यक्ति कोर्ट में चला गया. उससे पहले डिपार्टमेंट का ठीक है आप 100 रुपये महीना लेंगे बच्चे से. कहते हैं ठीक है 100 रुपये महीना हर बच्चे के हिसाब से मैं देता हूँ, तुम मुझे स्मार्ट क्लास प्रोवाइड करो. अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में उसने उसको परमिशन दी कि नहीं आप उतना चार्ज करें जितना आपको करना है. सवाल ये उठता है कि ये जो नई हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमें करनी पड़ेगी. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे. जब राजीव गांधी जी थे और ये कंप्यूटर की बात दिल्ली में आई थी, हिंदुस्तान में आई थी, तो हम बहुत सारे उन लोगों में से थे जिन्होंने कहा था कि हमारी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, यहाँ पर मैन पावर बहुत सारी है, और ऐसे में अगर ये कंप्यूटर ले आएंगे, टेक्नोलॉजी ले आएंगे, तो कहाँ जाएगा देश? जहाँ पे मैन पावर ज्यादा, वहाँ इस प्रकार से अगर मशीनीकरण को करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पर आज हमें अच्छा लगा है, आज भी 4G के बाद 5G भी मैं सोचता हूँ मेरे मोबाइल में कब शुरू हो जाए. हमें लेके चलना पड़ेगा. अब सवाल ये आता है कि जो बड़े अच्छे स्कूल हैं,
वहां तो पेरेंट्स दे देगा, मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर जाती है, वो जो भी मांगते हैं दे देते हैं, कोई एतराज नहीं। पर जो नहीं दे सकते उनके लिए सरकार को आगे आकर के हाथ बढ़ाना पड़ेगा, वो सुविधाएं देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अभी तो 1+1 तक 1+3 हो जाएंगे। जैसा मैंने अभी पहले कहा कि जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा वो आगे निकल जाएगा, नहीं कर पाएगा वो वहीं रह जाएगा, वही मेघालय वाली पद्धति हम लोग बैठे। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाए हैं, इससे पहले वाले पैनल पे एनईपी बहुत बढ़िया बात हो रही थी और मैंने उसका बहुत डीपली अध्ययन भी किया है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बशर्ते कि वो धरातल पे उतरे। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने 200 उसके लिए कमेटियां बनाई हैं, हर लेवल पे जो हर पॉइंट को उसको लेकर आगे बढ़े। मैं एक बात को कहना चाहूंगा, जब ये कंपल्सरी एजुकेशन आया था तो मैं पहले व्यक्ति था जिसने इसका पूरी तरह से विरोध किया था, पूरे हिंदुस्तान में विरोध किया था। मेरे कहने के बाद ही 31 मेंबर पार्लियामेंट को लेकर के इस कमेटी पे रिव्यू होता, उसमें मैंने कहा था इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आप यू हैव टू थिंक, दोबारा सोचना पड़ेगा। नो डिटेंशन पॉलिसी, हमने क्या बिना मान्यता कि आप स्कूल में चलाएंगे, मैं तो छुट्टी में चलाता हूँ, मेट्रो स्टेशन के नीचे 100 बच्चे पढ़ाता हूँ, बंद कर दो इसलिए कि मैं आपकी वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर पा रहा। और मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा था, आपने कभी पढ़ा हो कि दम तोड़ता कांग्रेस सरकार का मुफ्त अनवार्य शिक्षा अधिकार कानून कैसे मेरे ऊपर लागू कर दिया कि आप 40 बच्चे नहीं रखेंगे, 30 बच्चे इसमें रखेंगे जनरल के, 10 बच्चे रखेंगे ईडब्ल्यूएस के। तुम भी तो लागू करो, तुम्हारे लिए नियम बना था कि 1 किलोमीटर के अंदर तुम 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड करोगे, 1 से 3 किलोमीटर के अंदर सीनियर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल प्रोवाइड करोगे। आगे तो टीचर रेशो बराबर कर दिए, 1:40 का। अभी मैं आरटीए लगाई थी, 108 स्कूल में आरटीए थी एक क्लास में, आपको ध्यान है 125 बच्चे हैं। ऐसा भी तो इंग्लैंड में भेज दो, पहले उन्हें क्लास तो पहले उन्हें टीचर तो दे दो। तो सिर्फ ये है कि ये जो हम ऑनलाइन की बातें करते हैं या हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें चलना तो पड़ेगा इसमें। मेरे बहुत सारे मित्र मेरे साथ बैंक में थे, मैं तो बैंक से बाहर आ गया, पर वो अभी तक वही खातों में लेजर वगैरह चलाते। अब उन्हें मजबूरन कंप्यूटर चलाना सीखना, नहीं तो वो बाहर गए। तो हमें अपने आप को बाहर नहीं करना है। जिन पेरेंट्स ने मुझे भरोसा करके बच्चों को मेरे ऊपर सौंपा है, हम कहते हैं ना, आप में जो आपको बच्चा देंगे उसको तराश के हीरे की तरह आपको वापस करेंगे, तो तभी मैं वापस कर पाऊंगा जब मैं उस टेक्नोलॉजी के साथ उसको लेके चलूंगा। नहीं लेके चलूंगा तो सैमरम स्कूल में पहुंच जाएंगे, मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो दे सकते हैं। अब मैं कैसे दूं, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, इसके समाज को सोचना पड़ेगा। और अभी मैं बाहर जब खाना खा रहा था तो एक बात चली कि मुझे पता नहीं कि मुझे बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, पर चूंकि मैं बहुत साफ बोल से बोल देता हूँ, यूनिकॉर्न कंपनी आज 100 करोड़ से ऊपर का जिनका साल का टर्नओवर हो गया है। अरे जैन साहब यार 10 स्कूल में लगवा दो ना, आपका भी बन जाएगा कुछ, बच्चों से 50 ले लेना, हमें 40 दे देना। इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं उस प्रोफेशन में व्यक्ति हमसे वो एक्सपेक्ट करता है जो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं करता। एक टीचर से वो सारे वैल्यूज वो एक्सपेक्ट करता है जो वो टीचर ब्लैक बोर्ड पे चौक हाथ में लेकर के बच्चे को सिखाना चाहता है। न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, ये सबसे पहला लॉजिक है। अब पता नहीं दोबारा मुझे बोलने का मौका देने के लिए एक अपील मैं आपसे जरूर करूंगा, मुझे अच्छा मंच मिला यहाँ पे। मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा है 27 तारीख को, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और पूरी दिल्ली को मैंने उसमें देखा है। और ड्राइंग कंपटीशन भी मेरे जिम्मे है कि मैं दिल्ली के स्कूलों में ड्राइंग कंपटीशन भी करा रहा हूँ 20 से लेकर 24 तक। मेरी आपसे एक अपील है कि प्रधानमंत्री आपके बच्चों के प्रति जितने सीरियस हैं, जितना वो आपके प्रति सीरियस हैं, और पिछले 6-7 सालों से लगातार आपके बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए वो हर साल जनवरी फरवरी में आते हैं और बच्चों को खेल खेल में परीक्षा कैसे दें, कैसे तनाव से दूर रहें। तो 27 तारीख को 11 बजे परीक्षा पे चर्चा के लिए 9 से 12 तक के बच्चों को आप एक जगह इकट्ठा करके और प्रधानमंत्री का वो जो लेक्चर है परीक्षा पे चर्चा, उसको जरूर आप
अगर सुनवाएंगे अपने बच्चों को तो हमें लगेगा कि जो हमसे कहा जाता है कि काउंसलर लाओ बच्चों का स्ट्रेस दूर करने के लिए, मेरा सबसे बड़ा काउंसलर जो प्रधानमंत्री उस दिन बोलेगा, मैं समझता हूँ कि उसको हमें जरूर, मेरी अपील आपसे है तो उसको जरूर आप अपनाएंगे। और इसी के साथ ही देखिए, नहीं चलोगे टेक्नोलॉजी के साथ तो पिछड़ जाओगे। अब कैसे हमको उसको लेके चलना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिस वर्ग को हम पढ़ाते हैं, जो वर्ग मेरे को उम्मीद लेके आता है, उसको बोझ भी ना लगे और उसको हम टेक्नोलॉजी के साथ लेके भी चलें। थैंक यू सो मच, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा काम किया। और जो मुझे बात जो निकल के आएगी बातों से कि वो जो फेथ है पेरेंट्स का, बिकॉज जब हम पैसे की बात करते हैं तो अगर हमने जो पहले जो हमारी हिस्ट्री रही उस पेरेंट्स के साथ, अगर वो रही कि चलो पिकनिक के नाम पे 500 रुपए, तो पेरेंट्स को दिख रहा है कि कितना एक्चुअल खर्चा है। एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज डूइंग इट, पूरे 10% स्कूल्स की वजह से पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाती है। कि वो एक व्हाट्सएप पे कार्टून आया था कि प्रिंसिपल बोल रहे बच्चे से या पेरेंट्स से कि अब आपको आटा चावल और पेट्रोल भी हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा। सो ये जो इमेज बनाया गया एक्सप्लॉयटेशन का, दैट लाइन बिटवीन प्रॉफिटियरिंग जो है कि अभी आगे सो कैसे और पैसा निकाले, दैट्स समथिंग दैट स्कूल्स नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, एथिकली रिस्पांसिबल अबाउट, सो दैट वो जो ट्रस्ट होगा उसके बाद जब हम जेन्युइन अच्छा चीज लाएंगे, दे नो योर हिस्ट्री की ये वाकई मेरे बच्चों के लिए ये पैसे कमाने का सोर्स नहीं है। So I think that responsibility is on each of us for our own students कि हम वो bridges बनाएं, and transparency should be there, maybe involve parents in the committee when it comes to deciding new technology, show them what their children will benefit and what the cost will be, let it be transparent. So I think more and more adaptation होगा। So I think that was a very very important point कि जो exploitation हुआ है कि मुझसे एक चैनल पूछा गया कि एक स्कूल ने 5 अलग-अलग यूनिफॉर्म्स रख लिए 5 दिन के लिए, आपको क्या कहना है? मैंने कहा मेरा क्या कहना है, मेरे कोई रिश्तेदार है सारे स्कूल वाले। So it is just that ऐसे स्कूल लोगों को स्कूल नहीं चलाना चाहिए। लेकिन I've always been in the favor that there should be more competition. So parents जैसे आपने कहा अगर नहीं करूँगा तो let parents have a choice. Unfortunately अभी नए schools के लिए दिल्ली में private schools के लिए choice because supply increase नहीं हो रही, तो obviously control से हो रहा। That's a sad situation. But again I'd like to ask everybody in the audience as well. I'm sure you're all educators also. How has your school changed pre and post pandemic? Anyone wants to share or any question? I'd love to hear your experiences as well, because is it the same? Have you started using more technology? Any thoughts on that? Anyone would like to raise your hand? Yes. I think you have a school leader's voice, teacher voice होगा तो आप सुनाई दे जाएगा मुझे। Sure. एक्चुअली प्री पैंडेमिक की बात करें या पोस्ट पैंडेमिक की बात करें हम लोग, तो सर ने जो अभी बात कही ना, तो सर की जो स्पीच थी ना पूरी वो डेडिकेशन के साथ थी। और जिन लोगों ने काम किया है ना उसमें उनका कहीं फोटो नहीं है, ना कहीं नाम है ना कहीं फोटो है। लेकिन हम जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, हम लोगों ने और कई प्रिंसिपल्स ने, मेरे जो साथ जो मेरे को जानते हैं पर्सनली या जो अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, कई लोगों ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि मुझे लगता है कि वो आगे भी जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो किसी टीचर की छुट्टी नहीं होने दी मैंने, किसी भी टीचर की छुट्टी नहीं होने दी मैंने। दूसरी बात, आज तक की सैलरी अपडेट है, चाहे कहीं से उठा के दी मैंने, लेकिन आज तक की एक टीचर की सैलरी अपडेट है। तीसरी बात, बच्चे को पढ़ाने की बात है तो कहीं घर में मोबाइल नहीं था, उसमें फीस में भी कॉम्प्रोमाइज किया है, हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है। और सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट किया है कि सिचुएशन कैसी भी हो, हमें किसी स्कूल में खाने को दिया था और उस स्थिति में दिया था जब खाने को नहीं था, तो फिर भी अपना पेट तो भरना ही है, लेकिन उन लोगों का पेट भरना है जिनकी वजह से वो स्कूल चल रहा है। तो हम लोगों को प्री अगर पैंडेमिक की बात करें, पोस्ट की बात करें, इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया हमारे को। लेकिन ये जो हमने सीखा है ना, वो सीखा और बहुत दूर तक जाना चाहिए। और अभी टेक्नोलॉजी की सर बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अभी शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? टेक्नोलॉजी से ही पता लगेगा। तो टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे जरूरी खाना भी नहीं है। हम खाने के डाटा के साथ साथ हमें आटा भी नहीं चाहिए, हम डाटा पहले देखते हैं। तो डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए बच्चों को टेक्नोलॉजी का आदी ना बनाएं, टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाएं, उनको सिखाएं कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है।
लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको इसका अति ना बनाए, मतलब इतनी अति ना हो किसी चीज की, क्योंकि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। तो बच्चों को इसका आदी ना बनाएं। हाँ, बच्चों को यूज करना सिखाएं और वो भी पौष्टिक तरीके से यूज करना सिखाएं। तो भी टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है, लेकिन अभी तक बच्चों को सिखाने के लिए कि 9वीं क्लास का बच्चा इंस्टाग्राम कैसे यूज करेगा, ये चीजें अभी कहीं सिखाई नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा इनको जरूरत नहीं पड़ती, हम टीचर्स को सिखानी चाहिए, बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। और दूसरी बात है कि सुबह के सबसे पहले हम यही करते हैं, पहले लोग कहते हैं हम सुबह के चाय पीते हैं, अब सुबह के व्हाट्सएप चेक करते हैं सब लोग। राइट, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आई अप्रिशिएट व्हाट यू डन फॉर योर स्कूल इन टर्म्स ऑफ कि कैसे भी करके लोग एक घर चले हैं। और आई थिंक बहुत लोगों ने ऐसे कोशिश की, लोगों ने आई नो उन्होंने प्रॉपर्टीज बेच के अपना स्कूल को चलाया है, इन्होंने लोन्स लिए हैं जिन्होंने, और कैसे भी करके सबने मैनेज करा था, बिकॉज इंस्टीट्यूशन सबको मानता है 1 या 2 साल अगर किसी तरह से निकाल दिया तो इसका बेनिफिट जो है, जो ब्रांडिंग की फॉर्म में कह रहा हूँ, उसका आगे आपको मिलने वाला है। तो वो जो गुडविल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पेरेंट्स विल अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर, all I wanted to say was that after the use a mic please because वो कैमरा में कैच नहीं होगा फिर। so after the pandemic I felt was teachers, school leaders, principals, they started becoming more open to receiving, and everybody Sorry, open to? I didn't get that. receiving technology, Receiving technology, okay. as a part of the whole Yes, yes. offering within a school. वो scare खत्म, the tipping point was crossed. It is a key point, and schools that were ready to adopt technology at the beginning of the pandemic, they were able to deliver lessons far better and much faster than the other schools. So that has come about, and now when we talk to teachers about adopting technology solutions, they don't completely shut down. So that's one advantage, or one That mindset of teachers is now. that entire mindset has kind of opened up, and hopefully the problem is that sometimes tech solutions promise the moon and they don't even deliver the dirt. So that's Similarly, schools promise the moon to children and they don't deliver everything, right? So marketing is always like that. The problem is that the parent is stuck with you for 14 years if they choose you as a school, but the school is not stuck with the tech solution for 14 years, so they have the option to move on. So the tech solutions have to be better off and be more realistic in their concept. Yes. That's going to be Otherwise it's always disappointment. You implement something, even if something is good, but you were promised 1,000, you got 80, you think yeah, 1,000 more. I am a tech guy. I have ERP solution providers come up to me and tell me that our integration is seamless. For anybody who doesn't know, there's nothing called seamless ERP integration. It's always a painful thing. So Just like the title of this panel is a paradigm shift, right? So that's also one of those. Yes, sir. I think ma'am will come to you after that. Sir would like to say something, and I'll bit louder, sir. There is no doubt, in fact, as far as use of technology is concerned. We all agree, and of course, post-COVID, those who were not wanting to, they also came into mainstream. So that there's no doubt about it. If you are allowed, there is a question to sir. It's regarding NEP only, and we were talking about stress level, Pariksha pe Charcha, that context. What are your views about the board exams in 3rd, 5th and 8th? Sooner or later it's going to come. Not this year, maybe next year, maybe next year. So I just wanted to know your views on board exams for these classes. जो एनईपी के बारे में आप बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, एग्जाम तो 10th और 12th का ही होगा बोर्ड का, और वो 10th का जो एग्जाम होगा वो भी सेमेस्टर वाइज होगा, ये नहीं कि साल में एक ही बार हो जैसा पिछले दिनों हुआ है। जहां तक बात करते हैं 3rd, 5th और 8th की, देखिए वो टीचर का एग्जाम होगा, उसमें बच्चे उससे प्रभावित नहीं होंगे। उसमें ये देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें 3rd हो, 5th हो या 8th का जो एग्जाम है ना, उससे बच्चे प्रभावित नहीं होंगे, उससे टीचर प्रभावित होगा कि उसने 2 साल बच्चे को क्या पढ़ा, 3 साल वो टीचर का एक तरीके से देखा जाए, उसको आप पढ़े तो टीचर का इवैल्यूएशन है। यस, वो बच्चे का नहीं है। दूसरा,
इस एजुकेशन पॉलिसी का मैं इसे भी वो करूंगा कि अभी मुझे 12th तक पढ़ना मुझे जरूरी है या मुझे ग्रेजुएशन करनी है तो मुझे जाना है। अब इसमें जिस तरीके से 8th क्लास के बाद, जैसे पहले वाला पैनल बोल रहा था कि आपने पढ़ाई बनना है, आपने कारपेंटर बनना है, आपने ये बनना है, ये बनना है, ये पहले होता था हमारे, आपको ध्यान, जब हमारे IIT होते थे, IIT होते थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। अब ये जो हमने नई एजुकेशन पॉलिसी में लाए हैं कि 8th क्लास के बाद, जैसे आज हम 10th क्लास के बाद चूज करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है, ये 8th क्लास के बाद बच्चे को चूज करने का पूरा ऑप्शन उसमें है। उसको जरूरी नहीं है कि वो 12th तक जा करके फिर उसको, और जैसा अभी हरियाणा के चेयरमैन बता रहे थे कि ये करने के बाद जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इसको भी उस लेवल में करने जा रहे हैं। अगर आपने कारपेंट्री में इतना काम किया है उसमें, तो उसको उस लेवल जा रहे हैं आपको कॉलेज जाते हैं आप ग्रेजुएशन की डिग्री। दूसरा, मैं कई बार एक बात को कहा करता हूँ जो मेरे यहाँ टीचर्स बैठे हैं उनके लिए, एक टीचर मेरे यहाँ 5 साल से पढ़ा रही है, ठीक है, उसने JBT या BEd नहीं किया, 10 साल से पढ़ा रही है, तो मुझे उसको JBT या BEd के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसके 5 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस को मुझे JBT में कन्वर्ट कर देना चाहिए और 10 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस को उसको BEd में कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि वो उस लेवल पे आ जाए। ये मेरी बहुत लंबे समय से मांग है। तो मेरा ये मानना है कि NEP, अभी मुझे उसने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री लेक्चर के लिए बुलाया था अपने यहाँ, और उसमें उन्होंने कहा कि जैन साहब हम एग्रीकल्चर को किस तरीके से एजुकेशन में इन्वॉल्व करें। तो मैंने बहुत जोर से कहा था, तोमर साहब जो मिनिस्टर वो भी उसमें थे, तो मैंने कहा कि आप एग्रीकल्चर को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में क्लास में कम से कम 10th तक जरूर शुरू करें। नहीं तो मेरा देश का जो होने वाला अपने आप को कर्ण समझता है, वो कहता है कि जो गन्ना है उसमें से रस कैसे निकलता है, या आलू से मैं सोना बनाऊंगा, वो चीज बच्चा जो है जब उसे पता चल जाएगा गन्ने का खेत होता है, उसमें से रस निकलता है, गुड़ निकलता है, आलू जमीन में से निकलता है, उससे सोना नहीं बन सकता। तो अगर हम एग्रीकल्चर को भी एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, आप उसको नर्सरी से ना लेकर के फर्स्ट क्लास से ले सकते हैं और 10th तक उसको कंपलसरी जरूर करें एक सब्जेक्ट के रूप में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक आज मैं चीज और बता दूं, मैं इंजीनियर बच्चे को बनाना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, मैं सी बनाना चाहता हूं, पर अगर आप एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट के रूप में लेके चलेंगे तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, फिशरीज है और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप एक इंजीनियर डॉक्टर से ज्यादा बेहतर मन को संतुष्टि देते हुए कमा सकते हैं। सर कंटेंट का पहले बहुत प्रॉब्लम, इतना कंटेंट पहले ही है, एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा, और कंटेंट आ जाएगा। देखिए कंटेंट वो है उसमें जो हमने तय कर दिया कि मुझे इतना सब्जेक्ट पढ़ाना ही है, वो कम कर देंगे हम। मुझे दिमाग में ठूस के भरने से बजाय मुझे उतना ही हम पढ़ाएं जितना उसके दिमाग में बैठ जाए। जरूरी है मुझे 20 लेसन पढ़ाने, हम अपने स्कूल में 5 लेसन कम कर देंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्टर को थोड़ी बताना है कि मैंने BC पढ़ा दिए। सर उस क्वेश्चन वो सर की बात पे कि वो आप रोकें कैसे कि उस पेरेंट्स का, फिर बच्चों पे प्रेशर आएगा ना 3rd 5th और 8th का, अनलेस कि आप बच्चों का ब्रेकअप मत दो, टीचर को ओवरऑल क्लास एवरेज दे दो, तो ठीक है। बच्चे पे प्रेशर नहीं है, आप उसको देखिए, बच्चे पे प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ टीचर पे प्रेशर है। टीचर का वहाँ पे एग्जाम है, वो एक तरीके से बच्चा तो आगे बढ़ेगा क्लास में। यस। अब फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में क्या है, अरे तुम 16 साल के, जब बच्चा 17 साल में रहता है तब उसका एक बार टेस्ट लेते हो। इफ यू डोंट माइंड मैं बता दूं, अगर कोई स्कूल वाले बैठे हो नोएडा से, एक मेरे मित्र ने अपने किसी स्कूल में नोएडा में किसी को दाखिल करा दिया, 5th क्लास का होने के बाद भी उसको लिखना नहीं आता था, वो किताबें भी नहीं लिखते थे, होमवर्क नहीं करते थे, वो कहता भाई मेरे बच्चे को तो लिखना ही नहीं आता है 5वीं क्लास में आगे। तो मैंने उसको ला करके जमुना फार्मिंग स्कूल में दाखिल करा, फिर उसने लिखना सीखा। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल का। मैम one more question, I think you had raised your hand, one more question or comment on your side and थोड़ा सा mic, just bring your mic closer. Oh, now I have to. Yes. Yeah, good afternoon, everybody. So, firstly, giving the brief introduction, I am the only person over I'm from Kashmir. So, this is Jan, I'm headmistress of a school that's actually Academy. Sir, we were talking about the technology, like our school started only in 2019, then unfortunately for 2020 and 21 it was a pandemic. And our school
fully was dependent on the technology only at that time. It was not easy for us because the people in Kashmir, like those who are living in the remote areas, they're not even exposed to the smart mobile phones. But at that time, what our teachers, I feel my teachers are the warriors. I never call them as teachers, they are actually warriors. What they did, they went to each and every home. In fact, we had to teach the parents first before the students. Then only we could have taught the students. So we did everything for our students, and Alhamdulillah, by this stage, our school is fully digitalized school. We have launched our ERP where we upload our lesson plans, examinations, assessments, attendance, everything is digitalized. More or less, I can say that it's a paperless school this time. We are actually heading for that. It's the only school in the whole valley because the founder, the owner, the chairman of the school is from America. So it's an international based school where all the policies are actually drawn out from the American system of education. Actually, we had plans like exchange programs with the American schools. There's a Gilman school in America. We had some exchange programs with them as well. So presently, during the pandemic, I would like to mention that our school was the only in the whole valley which conducted the online examination or their own website portal. We have created that website portal where we can conduct the examinations like those which are conducted through the SSRB and other things. So it's a cbse affiliated school, very recent but fully advanced. And yes, perhaps internally I thank this pandemic 2 years because those 2 years actually compelled us also to be more dependent on the technology. But here, because we all are as parents as well, what I personally believe that there should be a balance for the students between the technology and the other methods of teaching, because we as parents need to keep a watch on the students while using the technology, need to keep a watch on our kids, because at the tender age they may be exposed to those things which is not meant for them. So that's what I want. Thank you so much. Thank you. And I believe because of Article 370, the 3G connections were also not working there at that point. Yes, sir. That was also a point before the Article 3G, like it was not applicable out there. But then with the 3G and now with the 4G also, it, like I personally feel as if our school was meant for the technology only. Because once we started our school, the technology was that we just launched everything through the technology. As it was born to be tech savvy. I think 5G promises to change a lot of things, especially picking up data from everything. So I think schools should be very ready now for a lot of data coming to you, a lot of analysis, a lot of dashboards. Be ready with that. I'm sure we're going to have a very exciting time when it comes to children's education with all this, so that we can make better decision making for the humans, how do we look at issues, and I think the coming year or so is going to change that after pandemic. So pandemic, NEP, I think these were really game changers in the last few years. So congratulations to all the educators who not become dinosaurs and upgrade themselves. Yes, ma'am. I taught a student right from class 3rd to class 12, and then just last 2-3 months back he came to visit me after so many years, and he told me, ma'am, thanks to you, I have now become additional sessions judge. So he really thought that I have trained him, though it was his own hard work. But just because I taught him from class 3 to class 12, so he gave me that respect, and I was really grateful to him. Thank you. When we face change challenges from government, from parents, from all sides as school leaders, these are the moments that I'm sure all of us educators really brings a smile to our faces when we hear these stories of our students and what they've achieved. I think that makes our willpower stronger कि नहीं करते रहना in spite of all the resistance from all ends. मेरा नंबर नोट कर लो, उसके लिए परीक्षा पे चर्चा के लिए जो अपने स्कूल में शुरू करे तो मुझे जरा टेलीफोन कर देना जी, मेरे स्कूल में हुआ है। जो नोट करना चाहे कर ले, आशीष जैन कर लो यार, मतलब टेलीफोन कुछ तो कर देना कि मैंने अपने यहाँ शुरू किया परीक्षा पे चर्चा। आशीष जैन 9810331709। और जो भी स्कूल में हमने शुरू करेंगे वो मुझे पीएम ऑफिस तक लिस्ट भेजने के लिए, देखो इन स्कूलों में आपके परीक्षा पे चर्चा पे डिस्कशन हुआ है, जो उसका हेड होगा उसका नाम भी जाएगा। ये मुझे दिल्ली और दिल्ली की तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर, अगर बाहर के भी हैं तो वो भी करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। व्हाट्सएप करते हैं? यस।
और तो प्रधान मोदी ऐप है, उस पर अगर आप फोटो भी डाल देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, वहीं से आपको एप्रिसिएशन लेटर आ जाएगा। Another use of technology. Yes. Thank you so much, P2B, for organizing this and this panel as well. I think I learned a lot from. Thank you so much to the panelists and thank you everybody for sharing your thoughts as well. Thank you so much, sir. So for that, I would like to thank to all our panelists and to our moderator, everyone. I guess we all learned.